Namaste everyone. Welcome to my channel. And this video is about the new circular that CBSE published today on the 22nd of March 2024. Putting an end to many speculations regarding the three-language formula for the board exam, especially at grade 9 level. And it also speaks about the new textbooks for grade 3 and grade 6. So I'll very quickly share my screen to show you the circular. I'm pretty sure many of you have already seen it because it's published today and widely circulated by CBSE. So probably it has already reached your hands, but let me just share it with you. So it talks about, secondary and senior school curriculum for the session 24-25 and new textbooks to be published by NCERT for grade 3 and grade 6. Now, as I announced it in my, shared with you in my last webinar, that grade 3 and grade 6 new textbooks are expected. But I told in that webinar also that the hard copy may not reach you because it takes, it's a long process to get things first ready and then getting it published. And publishing in such a huge quantity to cater to the entire country. पूरा देश को supply करना है, उसको print करने में, tender निकाल के सारी चीज का process में, we are not talking about what process NCERT follows. We are not going to go deep into that. But very clearly, कोई भी प्रोसेस जो है एक बुक को रेडी करने के बाद प्रिंट करने के बाद उसको मार्केटिंग करने में इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है, जो अप्रैल के अंदर तो नहीं हो सकता है, उसके तुरंत बाद इलेक्शंस है. सो आई हैव अ सीरियस डाउट दैट हाउ सून दीज हार्ड कॉपीज विल रीच यू, बट इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ दैट द सॉफ्ट कॉपीज are going to be published and uploaded on the NCERT website very soon. And it talks about grade 3 and grade 6 new textbook जो है ये दो क्लासेस में आने वाली है. Why? The reason is very simple. National Education Policy के तहत जो अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, 5+3+3+4, ये जो स्टेजेस हैं उसमें फाउंडेशन स्टेज नर्सरी से शुरू होती है. सो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 and 2. प्रेपरेटरी स्टेज जो है वो क्लास 3 से शुरू होती है, तो इसीलिए थर्ड का बुक को चेंज किया गया. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू स्टेज, द न्यू pedagogy, the new curriculum is being introduced in the first class of the stage, that is preparatory stage. Similarly, middle stage जो है वो स्टार्ट होती है क्लास 6 से. 6, 7, 8 is the middle stage. So again 6 is the first class of the middle stage. So 6th का बुक को चेंज करवाया गया और क्या गया. एंड ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ अगला बुक कौन से होने वाला है. नो रॉकेट साइंस इन गेसिंग दैट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ग्रेड 9, बिकॉज 9 इज द फर्स्ट क्लास इन द सेकेंडरी स्टेज. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. 3rd, 6th and 9th के चेंज आएगा, बाकी स्लोली फॉलो करेंगे. बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी ऑर्डर दिस टेक्स्ट बुक्स? द आंसर इज नो. अभी तक इसको ऑर्डर नहीं कर सकते. मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स से पता किया, उनके लिए इट्स नॉट रेडी फॉर ऑर्डर. बट what CBSE and NCERT is recommending, 2 दिन पहले NCERT ने भी एक लेटर पब्लिश किया, एक सर्कुलर पब्लिश किया. उन्होंने अनाउंस किया that we are making changes in grade 3 and grade 6 टेक्स्ट बुक्स. और उसने उन्होंने ये भी बताया जो यहां पर ये सर्कुलर में बताया हुआ है. पॉइंट नंबर 4, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, that is NCERT, has informed CBSE through a letter dated 18/3/2024 that new syllabi and textbooks for grade 3 and 6 are currently under development and will soon be released. So we can expect April May or middle of the April, the books will be released and uploaded on the website. Consequently, schools are advised to follow these new syllabi and textbooks for grade 3 and 6 in place of textbooks published by NCERT till the year 2023. तो यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि आप पुराना वाला एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो ना करें, नया जो टेक्स्ट बुक है, नया जो करिकुलम है, उसको फॉलो करें. आई कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट अभी नया टेक्स्ट बुक तो आया नहीं आपके हाथ में, पब्लिश होने वाली है. जब तक नहीं आती है वेबसाइट में अपलोड होगा, तो वेबसाइट में जब अपलोड होगा यू हैव टू रीडिजाइन योर करिकुलम एंड योर क्लास अलॉटमेंट, पीरियड अलॉटमेंट अकॉर्डिंगली. सो वी हैव टू वेट टू रोल आउट the curriculum, the pedagogy, the distribution of periods for grade 3 and grade 6, and we'll wait for the textbooks to be uploaded in the website. Additionally, a bridge course for class 6 and
concise guidelines for class 3 are being developed by NCERT. यहाँ पर और एक चीज बोला जा रहा है, क्लास 6 में एक ब्रिज कोर्स डेवलप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास 5 और क्लास 8 में स्क्रैप कर दिया गया नो डिटेंशन पॉलिसी को। तो अभी जो क्लास 5 के बच्चे हैं क्लास 6 में जा रहे हैं, वहां पर एक ब्रिज कोर्स का होना बहुत जरूरी है टू ब्रिज द लर्निंग गैप दैट हैपेंस बिटवीन क्लास 5 एंड क्लास 6। सो यहाँ पर एक ब्रिज कोर्स के बारे में बताया गया है। और एक चीज बताया गया है, कंसाइज गाइडलाइंस फॉर क्लास 3। क्लास 3 के बारे में बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाने हैं, पेडागोजी कैसे होंगे। So, for facilitating seamless transition for students to new pedagogical practices and areas of study aligned with NCF for school education 2023. Now, whatever NCF is telling, CBSE and NCERT is, emphasizing on that कि NCF follow किया जाएगा। NCF को पढ़ के आपको जितना समझ में आ रहा है उसको स्कूल में इंप्लीमेंट करें। और एक चीज और बात है कि इंप्लीमेंट करते वक्त आप CBSE का सर्कुलर का भी वेट करें। It's always okay to understand NCF and implement at the school level, but once CBSE comes out with a circular, that becomes a mandate. तो जब तक वो सर्कुलर नहीं आता है, आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो स्कूल लेवल में, keeping in mind the national education policy, the national curriculum framework, it's always welcome. अभी जैसे मैं लैंग्वेजेस में आऊंगा थोड़ी देर में, अब बन के रही इस लाइन वीडियो में। और क्या बोला गया है, there will be no change in the curriculum and textbook for other classes for the academic year 2024-25 commencing from 1st April. So it's a very big announcement that curriculum में कुछ भी बदल नहीं हो रहा है। So there is no change in the curriculum. The same curriculum that was there in the last year is to be followed this year as well. Now there are a lot of things that we need to read in between the lines and understand what actually we need to do. So schools are requested to share the curriculum 24-25 available on board's website, that is cbseacademic.nic.in, with all students and teachers. CBSE curriculum for classes 9 to 12 2024-25 can be accessed at the link secondary and senior secondary school curriculum. तो आप सीधा CBSE curriculum में जाइए academic website में, वहां पर सारे चीज डिटेल में समझाया गया है। So that is one part. The second part is this part, the curriculum that has been published. तो CBSE ने ऑलरेडी करिकुलम पब्लिश कर दिया है, और इस करिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सब जानना चाहते थे कि क्या हुआ, दो चीज मैं बात करूंगा। एक है वेदर देयर आर गोइंग टू बी 3 लैंग्वेजेस एट द बोर्ड लेवल। 3 लैंग्वेज क्लास 9 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या नहीं। सो यू कैन सी दिस इज द करिकुलम, secondary curriculum 2024-25, and in that I would always advise you to read the initial pages in detail. इसमें बहुत कुछ बताया हुआ था, salient features से शुरू करके, pedagogy से शुरू करके, everything. But now look at the subjects. The subjects are language 1, language 2, language 3 is there, but look at it, it's optional. So it clearly suggests that at the class 9 level, a 3 language formula in the compulsory way will not be implemented. ये कंपल्सरी नहीं किया जा रहा है, इट्स नॉट कंपल्सरी। सो 2 लैंग्वेजेस जस्ट लाइक इट वाज द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर जैसा था, इस बार भी वैसे ही हो रहा है, 2 ही लैंग्वेज रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन अ लिटिल डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेवल guidelines, and I have told earlier also. Now I'll very quickly share this and close the video, this sharing of the screen, so that I can talk to you directly. तो यहाँ पर ये सारे डिटेल्स जो है मैं एडवाइस करूंगा आप इसको पढ़ें। The circular is very clear. The secondary curriculum has been published. Reduction of syllabus नहीं हुआ, change of syllabus नहीं हुआ, सिर्फ 2 क्लासेस में बदल रहे हैं, क्लास 3rd और क्लास 6, और इसलिए क्योंकि वो प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज का शुरुआत का क्लास है, और वो बुक्स जब पब्लिश होंगे उसके हिसाब से हमें अपना करिकुलम को रीडिजाइन करने पड़ेंगे और सब्जेक्ट्स का अलॉटमेंट उस तरह से करने पड़ेंगे, राइट। सो टिल द टाइम इट कम्स अप, just carry on with the previous year module, and once it comes up you can make your relevant changes, but we very clearly know what are the expected changes. क्या क्या changes हो सकते हैं। method of teaching will be different, rote learning से competency में जाएगा, ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं। differentiated instruction, multilingualism, art integration, sport integration, gender sensitivity, 21st century skills, playway method of teaching, activity based learning, experiential learning, ये सारे चीज, multidisciplinary projects. So I'm pretty sure this is what is going to be there in the entire
syllabus for grade 3 and grade 9, because that is what NCF is talking about. NCF is also talking about the development of 5 koshas, that is Annamaya kosha, physical body, Pranamaya kosha, the energy level, Manomaya kosha, the emotional development, Vigyanmaya kosha, the intellectual development, and finally the Anandamaya kosha, that is blissfulness or absolute happiness of a child. तो ये पूरा जो करिकुलम का डिजाइन रहेगा, ये पंचकोश को ध्यान में रख के किया जाएगा. उस तरह से डेवलपमेंट और एक्टिविटीज बताए जाएंगे, आपको उसको फॉलो करना है. सीबीएसई का जो करिकुलम पब्लिश होगा, उस करिकुलम का जो लर्निंग आउटकम्स है, कॉम्पिटेंसीज है, वो आपको टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करने पड़ेंगे. तो यहां तक हो गया. अभी 3 लैंग्वेज का क्या करें? पहली बात तो यह है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सीबीएसई इज नॉट मेकिंग 3 लैंग्वेजेस मैंडेटरी. सो चिल्ड्रन कैन चूज only 2 languages, right? English and any other language, any other Indian language. Now, if you are in a place like, let's say, Maharashtra, where the government has mandated Marathi to be taken in the grade 9 and grade 10 level, irrespective of what CBSE tells, irrespective of the fact whether the child is choosing, Marathi, Hindi or Marathi at the board level, you need to teach them Marathi. So if the child is choosing Marathi at the board level, you may not teach Hindi to the child, और उसके लिए फिर 3 लैंग्वेज का कोई जरूरत नहीं है. अगर वो सिर्फ इंग्लिश और मराठी चूज करता है, you can go ahead with these 2 languages at the board level also. But in case the child is choosing English and Hindi, and then the child has not taken Marathi at the board level, then what you need to do is, you need to tell the child to take Marathi at the class 9 level, and after the child takes the Marathi at the class 9 level, he will appear for the exam at the school level, and the scores will be graded once. It will not be carrying marks. It will be a grade that can be assigned to the child. तो इस लेवल में मराठी को पढ़ाना पड़ेगा. So you can check with other states as well. What is the situation in Kerala? What is the situation in Tamil Nadu? And based on that, you can use your third language accordingly. So in most of the state, the language of the state will be made mandatory by the state, which will not be made mandatory by CBSE. So here there will be a call the school and the students have to take that. In case I'm choosing a subject which is not the state language, then I have to study the state language at the 9th and grade 10th level, and that can be assessed according to the guidelines of the state government. But it has maybe nothing to do with the board exam. So I hope I have made myself very clear. बोर्ड के लिए अगर आप मराठी ले रहे हो, go ahead with it. हिंदी पढ़ाने के लिए अलग से 9th में जरूरत नहीं है. बट अगर आप हिंदी ले रहे हो तो मराठी पढ़ाने का जरूरत पड़ेगा, और उसको स्कूल लेवल में असेस करना पड़ेगा, एंड बोर्ड लेवल में नहीं लेने से भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. So that is very clear to be understood. The second thing is 2 board exams. क्या ये हो रहा है? The answer is still not clear. अभी सीबीएसई ने करिकुलम रिड्यूस नहीं किया हुआ है. सीबीएसई ने जो एग्जाम का या करिकुलम का जो अभी तक पब्लिश किया हुआ है, वहां पर कहीं पर भी 2 बोर्ड एग्जाम का जिक्र नहीं है. तो अभी ये हो सकता है कि 24-25 में इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए और 25-26 से इंप्लीमेंट कर दिया जाए. बिकॉज व्हेन समथिंग न्यू इज टू बी इंप्लीमेंटेड, बहुत सारा डिसीजन होके रहता है, लेकिन उस साल इंप्लीमेंट करने में बहुत सारा बॉटलनेक्स होते हैं. There are a lot of problems. They have to consider the entire country's picture. तो कभी कभी पूरा देश का बात सोच के, आज हम लोग मार्च का लास्ट वीक में बैठे हुए हैं, इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने से क्या क्या रिपरकशंस हो सकता है, वो सोच के कभी कभी बोर्ड एक फाइनल किया हुआ डिसीजन भी उस साल लागू नहीं करता है, अगले साल हो सकता है लागू करे. सो राइट नाउ वी विल नॉट मेक एनी वाइल्ड स्पेकुलेशंस. वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन द लॉन्ग रन, गोइंग बाय द एनईपी एंड एनसीएफ स्पिरिट, मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम. दैट इज रिटन ऑन द वॉल. होना ही होना है. इस साल है कि अगले साल होगा, वो हमें देखना पड़ेगा एज पर द सीबीएसई सर्कुलर्स. बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज बी रेडी फॉर इट. तो अभी हमारा सिलेबस में चेंज नहीं, 3 लैंग्वेज 9th में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है. 11th में भी उसी तरह से 2 लैंग्वेज जो हमने बोला हुआ था कि एक फॉरेन लैंग्वेज और एक इंडियन लैंग्वेज लेना जरूरी है, वो भी इस साल बोर्ड ने कहीं पर मैंडेट नहीं किया हुआ है. And we have to wait and see in case board comes up with another circular where it tells that you have to take that second language, and whether it's going to be assessed at the school level or not, we will have to check that out. The third thing is, अगर आप लैंग्वेज ले रहे हो, एक मराठी लिया या कोई भी 11th में 2 लैंग्वेजेस लिया और 9th में 3 लैंग्वेजेस लेने के लिए बोला, तो उसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि उसको असेसमेंट स्कूल लेवल में करना है कि बोर्ड लेवल में करने के बाद चल रहा है. फिलहाल का जो सिचुएशन है उसमें 9 में आप 2 सब्जेक्ट दे सकते हो, एक फॉरेन लैंग्वेज और एक
मराठी हुआ तो मराठी एंड स्टेट लैंग्वेज आप ले सकते हो, फिर आपको तीसरा लैंग्वेज लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्टेट लैंग्वेज नहीं लिया, उस सिचुएशन में हो सकता है अगर आपने दूसरा कोई लैंग्वेज चूज किया, आपको स्टेट का लैंग्वेज एज अ थर्ड लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जाए, स्कूल का लेवल में असेस किया जाए, स्कूल का लेटर हेड में उसका मार्क्स दिया जाए या ग्रेड दिया जाए एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। So I hope this is very clear now. So wait for the grade 3 and grade 6 textbooks to be uploaded on the website. Not, immediately 3 language in class 9 and 2 language in class 11 is not needed. The third thing is, the 2 board exams again, CBSE has not given indication anywhere that 2 board exams will be conducted this year. So it may not happen this year. There's a possibility that it starts in 25-26. We have to wait and see. So I hope I have been able to make things clear. Please understand this and circulate this video widely to all the educators to clear their doubts. And in case you have any question, put that question in the comment section. I'll definitely answer it. And if you like my channel and the videos that I'm making, please do not forget to like this video and subscribe my channel and share this video with as many educators as you can so that there is no confusion. So very clearly I've explained 3 subject, 3 language का जरूरत नहीं 9th में, 2 लैंग्वेज का जरूरत नहीं 11th में, 2 बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी तक सीबीएसई ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट न्यू टेक्स्ट बुक्स 3rd और 6th का आ रहा है। 6th का एक ब्रिज कोर्स रहेगा, 3rd का करिकुलम डिजाइन चेंज हो रहा है, तो 3rd और 6th के लिए टाइम टेबल बनाते समय थोड़ा सा उसको चेक कर ले, राइट। ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई शेयर इन माय लास्ट वेबिनार is still applicable. So definitely watch my previous webinar and also the webinars that I have uploaded on my YouTube channel regarding the National Curriculum Framework, National Credit Framework, National Education Policy, the Holistic Progress Card. These are very, very important, webinars that I have, the videos you need to watch, widely circulate and get updated. And if there is a new update, stay subscribed to my channel. I'll definitely, when something important comes up like this, I will definitely make a video and publish on the same day. Thank you, everyone. Have a good day. Namaste.